Now we are going to discuss about trigonometric identities. Clear? There are some identities with the help of which we are going to solve some of the numericals based on trigonometric identities. Actually हमारे पास बेटा ओनली 3 आइडेंटिटीज हैं. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. With the help of these 3 identities, they will become 9 identities. Like, अब sin square theta यहाँ पे ना बेटा cos square को उधर शिफ्ट कर दो आप. So that is sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Clear? अब cos square को इधर रखो बेटा आप. 1 minus sin को उधर शिफ्ट कर दो. sin square theta. Clear? tan square theta equal to secant square theta minus 1. 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया. क्लियर? नाउ अब tan square को अगर उधर मैं शिफ्ट करता हूं, that will become secant square minus tan square is equal to 1. So that is secant square theta minus tan square theta equal to 1. Now shifting the 1 here, so that will become cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta. Cot square को उधर शिफ्ट कर दो, so that will become cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. और ये 3 आइडेंटिटीज में आपको लास्ट 3 एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूअसली बता रहा हूं बेटा. cosecant theta is equal to 1 by sin theta, secant theta is equal to 1 by cos theta, cot theta is equal to 1 by tan theta, and tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and also cos theta equal to cot theta equal to cos theta upon sin theta. Clear? Now with the help of these identities, we are going to solve the questions of exercise 8.4. It is a very important exercise and also some typical exercise for the exam point of view. Clear? With very carefully, with very concentration of mind, we are going to solve exercise this. Now solve the condition 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. कोई भी आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, you will convert every ratio, every condition in the form of sin cos, because the sin theta and the cos theta form is considered as the easiest form. तो जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी बेटा, you will convert the given condition into sin and cos. Clear? So in the same way, 1 plus tan theta क्या होता है बेटा हमारे पास, that is sin theta upon cos theta, plus what is secant theta, that is 1 upon cos theta, into in the next bracket 1 plus cot theta. What is cot theta? That is cos theta upon sin theta, minus cosecant theta, that is 1 upon sin theta. Clear? Taking the LCM here, that is cos theta. So what will be here? Cos theta plus sin theta plus 1
Clear? What will be LCM here? Sin theta, यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? Sin theta plus cos theta minus 1। अगर मैं दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखा जाए बेटा, तो ये कंडीशन जो है वही कंडीशन यहां पर क्रिएट हो रही है। जो वन यहां पर है सेम वन यहां पर है, यानी जो टर्म यहां पर है सेम टर्म इज टू बी हियर, वन हियर एंड वन इज आल्सो इन द अनदर ब्रैकेट, मींस it is considered as A, it is B, it is A and that is B. So there is an identities A plus B into A minus B. So A plus B into A minus B, that is A square minus B square, that is sin theta plus cos theta minus this upon cos theta into sin theta. Clear? A plus B whole square, so that is A square plus B square plus 2 A B minus 1 square 1 upon cos theta into sin theta। अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखो बेटा, ये कंडीशन sin square theta plus cos square theta, that is also 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1 and cos theta into sin theta, 1 to 1 cancel here, क्या बच गया हमारे पास? 2 sin theta into cos theta upon cos theta into sin theta। तो sin theta से sin theta cancel, cos theta से cos theta cancel, what's here? That is 2। So 2 will be the answer of this given condition after solving the questions। Clear? Now in this question, cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। क्लियर? हम इसके बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड द आंसर विल बिकम इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर? स्टार्ट टू सॉल्व LHS नाउ, टेकिंग LHS, that is cosecant theta minus cot theta square A minus B whole square, A minus B whole square, that is की बजाय पहले हम कंडीशन को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, so that is 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta whole square, so that is cot theta cos upon sin and the cosecant theta is equal to 1 upon sin, that is sin theta will be the LCM. What will be here? 1 minus cos theta whole square। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होगा और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी होगा बच्चे हमारे पास, that is 1 minus cos theta whole square upon sin square theta, that is 1 minus cos theta whole square upon sin square theta,
is 1 minus cos square theta। क्लियर? अगर मैं यहां पर 1 का स्क्वायर करता हूं बेटा तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 minus cos theta into 1 minus cos theta upon a square minus b square a plus b into a minus b। 1 minus cos से 1 minus cos cancel, so that is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta will be equal to the right hand side। okay beta? Now show that root 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to secant a plus tan a। Now in this question we are going to solve its left hand side, ठीक है? तो now taking left hand side, root 1 plus sin a upon 1 minus sin a। In this condition we use rationalization, clear? Now on 1 plus sin a upon 1 minus sin a into 1 plus sin a upon 1 plus sin a। हो गया रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, दैट इज 1 plus sin a 1 plus sin a, that is 1 plus sin a square upon 1 minus sin a 1 plus sin a minus b, a plus b, that is a square minus b square। clear? Now 1 plus sin a whole square upon 1 minus sin square, that is cos square a। clear? अब ब्रैकेट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रेशियो का भी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बना रहा हूं बेटा इसका, दैट इज रूट होल स्क्वायर 1 plus sin a upon cos a। रूट से स्क्वायर कैंसल, तो व्हाट इज हियर 1 plus sin a upon cos a, splitting the LCM here, so what will be 1 upon cos a sin a upon cos a, तो 1 upon cos, that is secant a, sin upon cos, that is tan a, equal to your right hand side। now show that sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tan square plus cot square। now again solving its left hand side, so that is लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, sin a प्लस cosecant a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस secant a होल स्क्वायर। क्लियर? a plus b whole square, what will be here, a square plus b square plus 2a into b plus a square plus b square plus 2
A into B. Clear? Now sin square प्लस cos स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं क्लब करता हूं बेटा तो दैट इज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस ये हमारे पास क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 इंटू sin A इंटू 1 अपॉन sin A प्लस secant square that is 1 plus tan square A plus 2 into cos A into 1 upon cos A. So sin square theta plus cos square theta that is 1 plus 1 plus cot square A plus sin to sin cancel, यहां पर है हमारे पास 2 plus 1 plus tan square A plus cos to cos cancel, that is 2. Now 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 2 7 plus cot square A plus tan square A equal to the right hand side of the given questions. Here 7 plus this in the same way 7 plus cot square plus tan square. So that is the solution of this question.